Today we are going to start with chapter number 7, Everything for the Best. In this chapter, we will study about a powerful king. एक king है who ruled over a kingdom, जिसने एक kingdom पे rule करा. Let's start the chapter. In ancient times, there was a rich and a powerful king who ruled over a vast kingdom. Pratap Singh was his advisor as well as his close friend. Caravan loads brought daily wealth into his capital and his kingdom was well administered by his minister under the guidance of प्रताप सिंह. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, एक बहुत ही रिच और पावरफुल किंग था, ठीक है, जिसका आपने देखा होगा प्रताप सिंह जो तो उसके एडवाइजर थे एज वेल एज हिज क्लोज फ्रेंड. उसका एडवाइजर भी था और उसका क्लोज फ्रेंड भी था. जो कार्बन होते थे, कार्बन लोड्स डेली वेल्थ लेके आते थे, ठीक है, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता था और उसको कौन एडवाइस देता था और किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? इन द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह. The only irritation the king sometimes suffered was to see the ills of famine, epidemic and wars which men seemed unable to avoid. He could not reconcile with Pratap Singh of repeated belief that everything is for the best. When challenged, the minister would reply that such burdens ennobles man's natures and teach him wisdom, so bringing mankind slowly toward perfection. ठीक है, लोगों को लगता था, आपने देखा होगा इसमें बताया कि जो मैन है वो जो आपके कंडीशंस होते हैं ड्रॉट के, वॉर के, ठीक है, उसको एपिडेमिक के, फैमाइन के, उसको हम अनअवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन प्रताप सिंह जो था उसका रिपीटेड बिलीफ यही था कि कुछ हर चीज किसके, एवरीथिंग इज फॉर बेस्ट, जो भी हुआ है कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, वो ये सोचता था. द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर, नो हार्डशिप इन द लाइफ एंड हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम बिकॉज ही ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी. देखो, वो हमेशा कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए वो हमेशा किधर की तरफ देखा होता था? पॉजिटिव साइड की तरफ देखता था, कि उस जगह की, उस चीज की जो पॉजिटिव साइड है वो उस पर ज्यादा ध्यान रखता था, ना कि नेगेटिव साइड. He would think of the benefit that could be derived from adverse sides. In fact, the particular trait was so prominent in him that others around him were often got tired of his oft-repeated belief. और सब इसके जो ऑफ रिपीटेड बिलीफ थे उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर ये देखता था कुछ भी परेशानी आ जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, वो कभी भी नेगेटिव चीजों पे नहीं जाता था, वो किधर जाता था? पॉजिटिव चीजों पे जाता था. One day the king and the Pratap Singh went out riding on hunting expedition to a dense forest. They pursued a deer in the forest and were soon lost deep in the jungle. Feeling thirsty and hungry, they began to look for water. ठीक है, वो जंगल में खो गए थे, ठीक है, they both were so thirsty and hungry. At length they discovered a solitary wood apple. When the king tried to cut the apple, as lucky would have it, the sword slipped from the hand and he cut off his finger. जो sword होती थी वो उसके हाथ से छूटे, उसकी finger कट हो गई. The king let out a piercing cry of pain. He was aghast when the saw bleeding finger. The minister who came running and asked the king, "What the matter, you majesty?" The king pointed out and served a finger and the sword that lay on the ground. ठीक है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, वो अपना हाथ पकड़ के ऐसे क्या करता है, वो एक पेन, ग्रीफ ऑफ पेन में चिल्लाने लग जाता है और उसका मिनिस्टर आता है कि क्या हो गया, और वो फिर उसको बताता है कि किंग पॉइंटेड टू हिज सेवरल सर्व्ड फिंगर, जिसकी कट गई थी फिंगर उसको दिखाता, कहता है कि जो स्वॉर्ड है वो नीचे गिर गई. Now, picking up the sword, the advisor in his characteristic way was about to say his favorite statement. So everything is for the best, is not it? asked the king ironically. वो sword उठाता है, वो king उससे पूछता है कि जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, isn't it? क्या ऐसा है? The advisor was as calm as ever. With due respect, he answered, "Yes, your majesty, may be a blessing in disguise." कि हाँ, हो सकता है majesty, कोई blessing हो तुम्हारे लिए एक disguised way में, ठीक है. Take it from me, something good is going to come out of this apparent tragic incident. God has willed in this way, so he should not complain. The king could not believe what his advisor had said. He could not comprehend how the loss of his finger could be a blessing. वो सोचता है कि यार ये क्या बात कर रहा है एडवाइजर, कि मेरी तो फिंगर लॉस हो गई, क्या ये मेरे लिए कोई मैजेस्टी होगा? ठीक है, ये क्या कोई ब्लेसिंग होगी मेरे लिए गॉड की तरफ से? The distraught king was sure his courtier was making fun of him. In his fury, the king ordered Pratap Singh out of his sight. Seeing that he had indeed enraged the king, Pratap Singh had no choice but leave the king alone. उसके पास और कोई choice बची ही नहीं थी,
उसको अकेला छोड़ के वहां से चला जाता है. In his hunger and pain, the king fell into an uneasy sleep. As he lay at the foot of tree, he discovered by a tribesmen of jungle who is in the last day of their great annual festivals were seeking a sacrificial victim for his tiger goddess. They were delighted to find such a handsome victim. They seized the king, bound his hand and feet and carried him away. वो क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, उसके हाथ पैर सीज कर देते हैं, ठीक है, और उसको वहां से ले जाते हैं. The warriors were in their colorful costume with plumes and holding the spears upright in reverse to their royal prisoner. They marched into the chief palace hostile. The tribal soldiers presented their booty to the chief, who judged that a prisoner was indeed of royal blood. ठीक है, वो जाके उसको ले जाते हैं अपने चीफ के पास और वो जज करता है कि जो प्रिजनर है he was indeed of royal blood. He was pleased with the Minion's prize catch. He decided that blue blood would be excellent offering to the supreme deity. Therefore, he sent for a tribal priest, an old man who come in soon afterward. As was the custom, the tribal priest has to approve of all offerings to the deity. It was his duty to say that each offering was perfect in respect. Seeing that king was going to be an object of sacrifice on that day, the priest did not inspect the prisoner from a head to toe. ठीक है, उसने कहा ये तो एक अच्छा ऑब्जेक्ट होगा सेक्रीफाइस के लिए, और उसने उसको प्राइस ने उसको इंस्पेक्ट तो करा ही नहीं प्रिजनर करो फ्रॉम हेड टू टो. इंस्टेड ही ऑर्डर दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले. दे टुक द किंग टू देयर altar. After some wild dancing, the final sacrifice preparation began with the smearing of red and yellow powder over victims' forehead, feet and hand. However, it was during the anointing of the body that old priest noticed that something was amiss. One of the fingers of the king's left hand was missing. जब वो ऐसे मतलब वो येलो पाउडर वगैरह सब कुछ डाल देता है, फिर वो देखते हैं कुछ चीज मिस कर रही है. फिर जब वो देखते हैं तो किंग की जो लेफ्ट हैंड था फिंगर थी वो मिसिंग थी. He shook his head and said in sonorous voice, "I am sorry, Your Royal Highness, we cannot proceed with the sacrifice. The deity will expect only those who are whole body." तो कहता है कि नहीं, हम अब सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे, वी मस्ट स्टॉप नाउ, क्योंकि डाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट. दे वांट अ होल बॉडी, जिसकी होल बॉडी हो वो उसको ही एक्सेप्ट करेंगे. द बॉडी शुड नॉट हैव ब्लेमिशेस. द प्रिजनर बॉडी इज इम्परफेक्ट एंड इट इज नॉट फिट फॉर ऑफरिंग ऑफ द डाइटी. इसकी जो बॉडी है वो इम्परफेक्ट है, इट्स नॉट फिट फॉर सेक्रीफाइस, ठीक है, इट्स अनफिट. द ट्राइब्समेन फेड इन हॉरर, for they had nearly presented an imperfect sacrifice and feared the wrath of the goddess. और वो एक एंगर, गुस्सा जो होता है वो उससे डर रहे थे कि कभी जो गॉडेस है वो हमारी गुस्सा ना हो. As the king moved away as fast as his leg could carry him, he realized that the loss of his finger had indeed been for best. But what of not having his minister company at the time of danger, was that for the best? Now, yes, said Pratap Singh later, for this he had known of the king's peril. He would have come to the king's aid and been overcome by the numerous tribesmen, thus serving a substitute victim. So everything was for the best after all. देखा ना, अगर उसकी उंगली नहीं कटी होती तो उसका सेक्रीफाइस हो जाता, लेकिन जैसे उसकी जो उंगली कट गई थी उसको देख के उसको वो बच गया. ठीक है, इसलिए ही प्रताप सिंह क्या कहते हैं, जो भी चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है, इज फॉर द बेस्ट. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. Thank you.